जो कि एक कंपनी में जाते हैं, वहां पे इंटर्नशिप करते हैं, वहीं पे फाइनली प्लेस होते हैं। सो वो एक लेवल ऊपर उनको जॉब मिलता है, एकदम एज अ ट्रेनी नहीं मिलके एक लिटिल अबव लेवल अबव उनको जॉब ऑफर होता है। Then it develops self-confidence through an expanded network of associates and professionals. Now, when you are a student, जब आप जॉब अपने कॉलेज में हैं, उस समय आपका एक अलग नेटवर्क है, दोस्तों का ही ज्यादातर नेटवर्क होता है, ज्यादा आपके सीनियर्स का आपका एक नेटवर्क हो जाएगा। बट व्हेन यू गो एंड वर्क इन अ प्लेस और यू डू एन इंटर्नशिप, वहां पे आप एक वर्किंग नेटवर्क बनाते हैं, एंड विच इज वेरी वेरी इसेंशियल आपकी फ्यूचर ग्रोथ के लिए। आपके आगे जो अपॉर्चुनिटीज आपको काम की मिलेंगी रिलेटेड टू योर प्रोफेशन, रिलेटेड टू योर वर्क, रिलेटेड टू योर करियर, जो अपॉर्चुनिटीज उस नेटवर्क से मिलेंगी वो आपके स्टूडेंट कम्युनिटी के नेटवर्क से वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी आपको। सो इंटर्नशिप जब आप करने जाते हैं, इस चीज का ध्यान भी रखिए, इंटर्नशिप सिर्फ जाना है और एक सर्टिफिकेट लेना है इसलिए मत करिए। इंटर्नशिप्स विद अ पर्पस कि मुझे अपना नेटवर्क क्रिएट करना है, मुझे वहां के प्रोफेशनल से सीखना है, लर्निंग को ध्यान में रख के आप इंटर्नशिप्स के लिए जाइए। अगर सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेना है या कि इंटर्नशिप कंपलसरी है इस कोर्स में, then I would rather suggest आप इंटर्नशिप करिए ही मत, राइट? इट्स बेटर, फिर तो कॉलेज में जैसा चल रहा है वैसा चलता रहने दीजिए। सो इट्स बेटर दैट यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द इंटर्नशिप। एंड इंटर्नशिप्स अभी अलग अलग स्ट्रीम के लोग आपसे डिस्कस भी करेंगे कि किस सेक्टर में कितने इंटर्नशिप्स मैंडेटरी होती हैं, कंपलसरी होती है। इंटर्नशिप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। एंड विदाउट अंडरमाइनिंग द करिकुलम और द एकेडमिक्स, जो आप इंटर्नशिप में 3 महीने में याद सीखते हैं वो आप साल भर में भी नहीं सीख पाते हैं किताबों से, बिकॉज इट्स हैंड्स ऑन लर्निंग। एग्जैक्टली कैसे काम होता है वो आप सीख जाते हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दोज इंटर्नशिप्स। Then it facilitates a higher starting salary than non-interns. अगर आपने अच्छी इंटर्नशिप्स कर रखी हैं तो आप जब फाइनल जॉब्स आपको मिलेंगे, प्लेसमेंट्स होंगे, आपका फर्स्ट जॉब थोड़ी सी हायर सैलरी और हायर पोजीशन पे होता है, बिकॉज आपके पास एक्चुअली इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। यू हैव ऑलरेडी वर्कड विद दैट इंडस्ट्री, वर्कड इन दैट करियर, सो द कंपनीज ऑफर यू, क्योंकि एक कंपनीज का थोड़ा सा ट्रेनिंग का जो पूरा कॉस्ट आती है, टाइम होती है, वो ऑलरेडी कम होती है। सो दे प्रेफर टू गिव जॉब्स टू द पीपल हु आर ऑलरेडी ट्रेन्ड इन दैट इंडस्ट्री, एंड इंटर्नशिप इज दैट वन प्लेटफॉर्म दैट ट्रेन्स यू। उसके बाद हैव रिज्यूमे बिल्डिंग एक्सपीरियंस बाय अप्लाइंग एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। आई थिंक एक बार अभी हमारा जो लास्ट वेबिनार हुआ था वो रिज्यूमे बिल्डिंग पे हुआ था, और हमने तभी कहा था कि जितने इंटर्नशिप्स करेंगे वो रिज्यूमे में जाएंगे आपके, जो आप लोग रिज्यूमे बनाएंगे, एंड मोर इंटर्नशिप्स एंड मोर प्रोजेक्ट्स दैट यू डू, दे रिफ्लेक्ट ऑन योर रिज्यूमे, एंड they can also help you put across what you have learned. आपने जो इंटर्नशिप में सीखा है, जिन चीजों को, जिन कॉन्सेप्ट्स को, जिन प्रिंसिपल्स को, जिन वर्किंग स्टाइल को सीखा है, आप उसको अपने रेज्यूमे में लिख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में इस समय इंटर्नशिप करी है, एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स, दीज आर द प्रॉब्लम्स आई हैव वर्कड ऑन, दिस इज द प्रोजेक्ट आई हैव वर्कड ऑन, एंड यू मेंशन दैट इन योर रिज्यूमे। सो आपका रिज्यूमे इतना पावरफुल और इम्पैक्टफुल हो जाता है फॉर योर फर्दर job placements or final job placements. Then it ensures personal growth experience and exposure to different job opportunities. Suppose in your college life of 4 years, आप 7-8 internships करते हैं, let's say 4 भी करते हैं, अगर आप 4 internship, every year 1 internship even if you are doing, then you can see how, and you are doing industry same है but different industry के जो एरियाज हैं उनमें आप काम कर रहे हैं, तो आपको डिफरेंट जॉब्स किस तरीके के आगे होते हैं आपको पता चल जाएगा। अगर आप हॉस्पिटैलिटी से कि क्या मैं फ्रंट ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, या मैं बैक ऑफिस में काम करना चाहता हूँ, या मैं सर्विसेज में काम करना चाहता हूँ, या मैं ऑपरेशंस में काम करना चाहता हूँ, आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज और जो करियर्स हैं उनकी ग्रोथ कैसे होती है ये समझ आ जाती है। सो यू गेट दैट एक्सपीरियंस की देन यू कैन मेक आउट ओके, अगर मैं हॉस्पिटैलिटी में हूँ, हॉस्पिटैलिटी में मैं देखता हूँ कि ऑपरेशंस में ग्रोथ ज्यादा है, so let me focus on the operation side of hospitality, वो करियर ज्यादा अच्छा है, my temperament, my personality, my aptitude, my interest, everything fits with this part of the hospitality industry और ये मुझे ज्यादा growth दे रहा है, then you can work your or focus yourself totally towards grooming that sector of the industry. Then it gives you hands-on opportunities to work with equipments and technology.
लॉट ऑफ टाइम इट हैपेंस कि हम पूरा कॉलेज सिर्फ किताबों से पढ़ के पूरे एग्जाम क्लियर करते हैं. मोस्ट ऑफ us know that we just study to pass the exams. हमने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा और फिर उसके बाद एग्जाम दिया और नंबर आ गए एंड वी थिंक वी आर डन विद. सो जो एक्चुअल प्रोसेस है, इक्विपमेंट्स है, इंजीनियरिंग में खास तौर पे मैं बताना चाहूंगी, या मेडिकल एंड नर्सिंग में मैं बताना चाहूंगी, जहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग होता है, या हॉस्पिटैलिटी में भी प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स एंड प्रोसेसेस आपको यूज करने हैं, वहां पे ये इंटर्नशिप बहुत हेल्पफुल होती है. बिकॉज यू एक्चुअली लर्न, एक किताब में पढ़ा हुआ और एक हाथ से काम किया हुआ, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर. What you do with hands is different from what you read from a book. So the things or the working that you do with the machines with your own hands, you'll remember it more, you'll understand it, and it will be embedded deep into your learning process. So ये कुछ benefits हैं जो मैं students को बताना चाहती हूँ. internships के लिए, students के लिए हैं. मैं बहुत 2-3 मिनट का और समय लेके बस इतना सा बताऊंगी कि इंटर्नशिप का फायदा इंटर्नशिप प्रोवाइडर्स को और कॉलेजेस को भी कैसे होता है. सो ऐसा नहीं है कि इस पूरे गेम में आप ही हैं एज अ स्टूडेंट जिसको फायदा होने वाला है, उन लोगों को भी उतनी ही रिक्वायरमेंट. अभी हम थोड़ी देर पहले विक्रम जी से बात कर रहे थे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से कि इवन द कंपनीज लुक फॉर गुड इंटर्न्स. आशुतोष, कैन यू जस्ट मूव फॉरवर्ड द स्लाइड? Okay, let's talk about, oh, sorry, internship provider. Sorry, that was right. Just one back. Yes. So even the industry people, they look forward to the young students who come with a new thought process, with a new mind, जो risk लेने को तैयार हैं, जो कि नया सोच लेकर आते हैं. It saves money for the industry also because they don't have to pay them the way they pay to their full-time employees. Paid internships हैं, but definitely there's a difference between what they pay to the intern and what they pay to the full-time employer. But the work is the same, the learning is the same. So even the internship providers, यानी कि organizations या companies भी जो हैं, उनको भी उतनी ही जरूरत है interns की. अभी आप देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग में यूट्यूबर्स हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनकी टीम में 90% इंटर्न्स काम करते हैं. मैं जितने लोगों को जानती हूँ वो सब लोग इंटर्न से काम कराते हैं. दे डोंट हायर फुल टाइम एम्प्लॉइज की जिनको सारे बेनिफिट्स देने पड़े, बट दे पे रियली गुड एंड बट दे ऑल आर इंटर्न्स. एंड बहुत सारे बच्चे इंटर्नशिप को एज अ साइड हसल भी लेकर काम करते रहते हैं. सो इंटर्नशिप प्रोवाइडर्स को एक फ्लेक्सिबल कॉस्ट इफेक्टिव वर्कफोर्स मिल जाता है. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स नहीं है उनके, कोई पीएफ नहीं देना है, कोई बेनिफिट्स नहीं देने, कोई पर्क्स नहीं देने हैं, बट देन दे गेट यंग एनर्जेटिक staff to work for them. Then professional staff को भी उनको इतना नहीं एंगेज करना पड़ता. There are lot of like अभी विक्रम जी बोल रहे थे कि वर्ल्ड कप आ रहा है, दोहा में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बहुत ओपनिंग्स आएंगी यंगस्टर्स के लिए. They need lot of workforce. तो जो बच्चे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है या जो भी इंडस्ट्री में, आप देखिए कि क्या इवेंट्स आने वाले हैं, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है. तो आपको जब इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी क्योंकि वर्कफोर्स की जरूरत होगी. इस वहां पे इंटर्नशिप्स की जरूरत, इंटर्न्स की जरूरत पड़ती है. देन ऑब्वियसली दे ब्रिंग न्यू आइडियाज, नए थॉट्स होंगे, नई सोच होगी. एडेप्टेबिलिटी भी बहुत हो जाती है क्योंकि आप नए इंटर्न हैं, तो आप जैसा आपके बॉसेस या कंपनी में आपके सीनियर्स कहेंगे, आप उस तरीके से अडेप्ट करेंगे एंड यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट. सो और अगर आप इंटर्न है, मैंने आपको बताया था बहुत सारी कंपनीज इंटर्न्स को एज फुल टाइम एम्प्लॉइज ले लेती है व्हेन इट कम्स टू फाइनल प्लेसमेंट्स. Next slide, please, Ashutosh. I'm moving a little fast, but I know there are a lot of people. Okay, now how the internships benefit your college and universities. Colleges and universities भी आपने देखा होगा, जैसे अपनी placements को highlight करते हैं अपने advertising में, उसी तरीके से वो internships भी उनके लिए फायदेमंद होती है क्योंकि जहाँ internships होती हैं वहीं final placements होते हैं. Final placements reflect करते हैं कि आगे के batches admissions कैसे होंगे, what kind of students they can hire, all those kind of things. So even they prefer that students go to good places for internships. I'm sure your college will also help you in finding the internships. Otherwise, Abhi Ashutosh is going to help you with कि आप online कैसे internships ढूंढ सकते हैं, apply कर सकते हैं, what is the process, right? And then universities and colleges also get to understand कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो कितना relevant है, कितना match करता है industry की requirement के हिसाब से. Even college and universities को इस चीज का फायदा होता है internships को. And if
the students from a particular college do a lot of internships, तो उस college की value भी बढ़ जाती है, more competitive and employable graduates निकल के आते हैं because they have industry experience then. Okay. So these are the few things that are there. As a student, you have to keep in mind when it comes to internship. Benefits बहुत ज़्यादा हैं, so just take it very seriously. Final job placement पे focus. वो तो फाइनल डेस्टिनेशन है, ये माइलस्टोन्स हैं आपके, ये मील के पत्थर हैं जो आपको बताएंगे कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं. So this is all I wanted to speak about it, and now I would like Dr. Vandana to take over and tell you what preparation you are required to do for an internship. Thank you so much. Sonali, thank you so very much. Let me go very quickly because हमारे पास time बहुत कम है. So the point that arises over here is what is the preparation you as students are going to do for your internship. Yes, certainly you have to research companies and find out what are the internships they are offering, right? Because for that you can do a lot of research. You have, web sources, internet, then you have, newsletters, magazines, their journals and all that. So you can find out, and even you can be in touch with your training and placement cell to find out what are the internships they are offering. Accordingly, you have to craft your resume because it varies from companies to companies. It varies from their requirement. What is it that they are looking for in specific technical requirement in interns? So you have to accordingly design your resume and always be in touch with your mentors and the training and placement cell in order to have a good, effective, impressive resume. Then work upon how are you going to introduce yourself, because there is going to be an interview. वहाँ पे आपको interview में बताना पड़ेगा. You don't have to talk about your biological statistics and all that. वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा who are you, what all you have done, what has been your interest areas. This is all what you are going to speak when it comes to giving an interview for your internship. Then decide upon the internship goal, because if you have a career, you have decided upon a career. So accordingly, the internship, because internship is one of the phases which would take you towards your career. So आपका career और internship के बीच में matching होना चाहिए. That should be taken because it's one of the steps, and that would be taking you definitely towards your career goal. Yes, organize your dossiers. Whatever documents you have so far, आपके mark sheets हैं, आपका resume है, or certificates that you have received, whatever courses that you did, definitely you get a certificate towards the end of a course. So put them in at one place. We have got wonderful folders, available. उसके अंदर आप अपने जितने भी dossiers है, documents है, उनको आप align कीजिए, so that whenever it is required at the time of interview, you can easily produce those things and showcase your whatever skills and talents you have. As I said in the beginning, be in touch with your mentor and training and placement cell, because they are, wonderful support during the time of your internship and placement. Prepare yourself technically and professionally, because whatever you have learned, maybe after 1 year of your course, you'll be going for internship. So during that period, you need to, whatever you have learned during this one period, all the technical fundamental knowledge related to your subject core area, you need to have a good idea about it so that you can deal well in the, do well in the interview. Professionally, how do you dress up and all that stuff, carrying yourself very well mentally, you are, agile, active, on your feet, everything. Dress up, as I said, that is very much connected with the previous bullet, and be happy and positive. Always have this feeling that, yes, this is something that I'm going to achieve, this is something that I'm going to do. So उस पे आपका फोकस ये होना चाहिए कि yes, ये आपके करियर का बिगनिंग है, and I have to give my best foot forward. Next slide. Ashutosh ji, next slide. You are already on the next slide. Okay, thank you so much. So I forgot to tell you that you have to have before the internship that we talked about. Now during the internship, how are you going to work over there? Mentally, emotionally, physically, technically, professionally.
So learn and develop skills. आपको internship में जब मौका मिल रहा है, wherever you are going, whatever company you are working with, you need to pick up the skills that come across that you are working, the people, team, whosoever you are working with. तो जो भी आपको वहाँ पे knowledge मिल रही है, उसको develop कीजिए, because this would help you in achieving your goal. Whatever orientation training, because normally the companies, they conduct training programs for interns, which is called a kind of induction. So do attend that orientation program, because you'll be told a lot, you'll be familiarized with the company, their functioning, what are the verticals they are into, what are the functions that you are required as an intern you're required to perform. Whatever tasks are assigned to you over there in the company, please do fulfill those tasks, because that is your responsibility. And once any task is given to you, you need to be perfect. You can take the help of your company supervisor, company guide over there. And whenever you have any doubt or anything is ambiguous and unclear to you, please do ask the questions. Don't keep things to yourself. Don't hold yourself back. बहुत जरूरी है कि आप questions पूछें, because that shows you are an inquisitive learner. You want to be there, you want to learn the system, you want to be with the system. And keep informing your mentor. जो भी आपके faculty guide है वहाँ पे institution में, आप उनको inform कीजिए, उनको बताइए कि आपकी क्या progress होती है. वैसे एक mechanism पूरा proper होता है, where you need to be in touch with the at regular intervals, you need to be in touch with your faculty guide. Whatever hours you are spending, whatever time you are doing over there, when are you punching in, punching out, how long do you stay there, did you go to the field also, कहीं आप बाहर field में भी जाते हैं वहाँ पे, तो वो सारी चीजें you have to have a proper notebook where you mention day wise schedule of your work, whatever work you do. So that would help you towards the end of when you are supposed to compile a report. जब आपको end में एक report submit करनी होगी, तो जो भी आपने अपनी notebook में लिखा है, you can pick up things from there and put it in the form of a report. Whatever you are learning, yes, whatever you have learned today, whatever you experience, जो भी आपकी learning हुई, आप किसी से वहाँ company में मिले, there was somebody, कोई guest आए, बाहर से industry से आए, there was some other person who came, there was a meeting or there was some session, उसकी आप noting जरूर कीजिए, because that helps you a lot, that adds to your experience. Yes, this is a very fundamental thing. Communication, you need to communicate nicely with people over there. कोई भी है, चाहे वो आपके जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, आप उनके साथ में भी अच्छे से बात कीजिए and have a very cordial relationship, because this is something that would help you later on. ये आपकी नेटवर्किंग को बिल्ड करेगा. इसलिए cell phone, use of cell phone, if there is a system you are not supposed to use your cell phone during the time of your work, please put it aside, or whatever the mechanism they have, follow that mechanism. Social media, big no, unless you are you are in a break or something. Then after the internship, yes, participate in self, because once you are back आपके institution में आकर के ये exercise होती है जहां आपको अपनी learnings को share करना है, जहां आपको अपनी experience को share करना है in a very structured format, which is called a sharing this thing program. Then reporting, as I said, आपको अपनी report जो भी बनानी है वो report बनाइए, and now your self pitch is different, which has a good input of internship. आपने internship में क्या किया, how that benefited company, क्या आपका रोल था, वो सारी चीजों पे एक आपको अपना internship pitch तैयार करना है, जैसे आपने अपना self pitch तैयार किया, जैसे हम introduction भी बोलते हैं, but that is a little different thing. And be in touch with the people in the company, उनको एक thank you letter. It is very very considered to be very courteous and very nice that you write back to these people, to your company person guide, a thank you letter, and be in touch with, get connected with the person on LinkedIn and other people from different departments also. Expand your network. This is the time that you start building your network. So LinkedIn is one of the platforms that you can use. Keep updating. You need to now, since you are through, you have done the internship, so now you update things in your resume. And also mention that this is taking you towards your career plan, whatever you did. Next move, now you have a time to think. You have gone through a process. Now you have a time to think, to find out and see
is it taking me to my career, and what all I can do next. SWOT analysis. I think you have had this exercise, SWOT analysis आपका हो चुका है, जिसमें आपको अपनी strengths, weakness, opportunities, and threats after doing this internship that you can talk about. Now become proactive, take up courses. You can do a lot of, आप अपनी technical knowledge को कैसे enhance कर सकते हैं, massive open online courses कर सकते हैं related to whatever work you want to do. Capsule programs which are happening in your institution, you can attend. You can always approach the cell also, TP cell, to ask them to organize such programs and presentations. Be a part of presentations. Do go ahead for with minor projects and represent your institution whenever there is SIP contest is happening. This is something that I almost I have said in my, it indirectly comes from my previous slide. Keep evaluating, looking, relooking, revisiting, and seeing that am I on the right track. जो भी आपने अभी तक किया उसको check कीजिए, recheck कीजिए. Volunteer, take initiative, because now you are technically good. You have some information, knowledge at your hand, so please do go ahead and do it. Now find work for yourself. अब आप अपने लिए तलाश करना देखिए कि अब आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं और कहाँ कैसे कर सकते हैं. Start jotting down the things, recording of things that you come across, especially technical things. Keep all company information private. Yes, this is very, very important, very confidential. The companies, they don't entertain people who breach the information, who share the information with any other source. Watch your actions. Be very particular. You need to work upon yourself. Now it's the time that you see whatever you are doing that is helping you out behaviorally and technically. Write your accomplishments, and yes, whatever you have done, maybe in your this thing internship, आपने बहुत अच्छा काम किया है तो आपको वहाँ पे वो अवार्ड किया गया, सर्टिफिकेट तो वैसे टेक्निकली मिलेगा, बट फिर भी अगर कुछ भी अप्रिसिएशन आपको वहाँ मिलता है, प्लीज डू मेंशन दैट एंड कीप ऑन बिल्डिंग. Ask for a recommendation letter, because this has my students were thoroughly helped. They got immense help when they asked for the recommendation letter from me as a faculty guide. तो उनको देने से बहुत हेल्प मिला. जनपेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैंने दिया था तो उनको काफी, and they got the assignment job of their choice that you are offered PPO. Make it a point that I would walk out of this company with a PPO in my hand. Next. Positive traits, ask questions, inquiring mind. Companies को बहुत अच्छा लगता है आप questions पूछते हैं. Be a team player, enjoy challenges that come across. Innovate, think out of the box, come up with solutions to different problems differently. Have compliance, follow the rules and regulations. Then this is solidarity, collegiality. Be very courteous, cordial, helping out people, working together. Discipline and reliable, that's punctuality, going on time, coming on time. These are the things. And finally, be proactive. Don't limit yourself to the information, move out of the information as well. Next. Okay, thank you so much, guys. I hope I tried to do it as quickly as possible. Thank you, Vandana ji. Have a very nice, insightful. Ashutosh ji, we can take up this once if they require somebody needs more information, more deliberations, then we can take it up later. Definitely. So guys, thank you so much for being so fast. Next level, and thanks for your insightful coverage. All this will really be very helpful to all the students. Thank you. So yeah. So I'll start with the best ways to avail internship. Let me just. So what are the best ways? The first, there are so many ways that we all have talked today. We have talked about the references. We have talked about availing it from colleges. Colleges also providing. Then SBA will also be forming the internship core team, which will be helping the students in terms of availing the internship. As I said, you'll have to work hard, definitely. But today I want to focus on some of the internship opportunities which are available on World Wide Web. You can just go there and avail it, which means you can definitely apply for it. And based on your overall profile and we'll look at that also, you'll get those opportunities. The first is Internshala. Is it like internshala.com? You have to go. I'll go to that in detail.
And then we have Zuno, which is a unit of Monster India. And then we'll also look at quickly on LinkedIn, how we can use LinkedIn for availing the opportunity. And then some brands where we can directly apply, and we'll look at some sample emails which you can send directly to them. So the first is Internshala. Let me go to the website of Internshala, because there I think it will be clear to you in terms of how to look at it. The good thing about Internshala is that you can avail opportunity in any of the areas, that you want to avail. So this is the website of Internshala. As you go to the Internshala, just on the first, what you're looking at. Suppose, you want to do internship and you want to do internship from home. So you can just select work from home, or you want to do a part-time job, or if there's a particular area, for example, digital marketing, content writing. If you are doing, suppose, education related courses, you can go for content writing, you can go for teaching, you can go for computer science and engineering, you can go for machine learning, whatever is choice. So for example, I click on work from home, because many of you would be interested in work from home. By default, it will select work from home. So it will only show you the opportunities which are for work from home. Now you can also mention the amount. For example, your minimum is, suppose, 4,000 you want in the internship per month. And the area that you're looking at is, say, suppose digital marketing. So all the opportunities which allow you to do internship in digital marketing or content writing or influencer marketing, all of them, plus they give you a salary of more than 4,000 per month. And they also give you the opportunity to work from home. You can directly look at all of this, and then you can apply. So we will look at, how to apply for that. You just have to click on view details, and then you have to just apply. But when you are opening this and you are going through the job profile, which is 10,000 to 15,000 per month, 3 months of internship, quite a good opportunity. Work from home is also allowed. But you focus on these skills required: blogging, creative writing, digital marketing, English proficiency. For that, we are giving you the English language program, search engine optimization, social media marketing. Make a note of all of this, very, very carefully, because when you are applying to that, and we will look at that in the next slide, you will have to link your profile with the information that is given there. For example, the kind of skills that they want, SEO, blogging, creative writing, you have to give all those information so that it is easier for them to select you. Most of the people make this mistake that they write randomly. And when you're writing randomly and you're not linking to do the kind of skills that is needed for them, it will be difficult for you to get the opportunity. So just keep this in mind. The CV part we have covered in earlier webinar. It is also there on the SBA YouTube channel. How to get a good CV. We will also share, I think we have already shared, otherwise we'll share a sample CV with all of you, which you can create. But do look at the key skills and focus on that, when you are creating a CV or when you are filling up the form for them. So the second one that we have is, we can look at LinkedIn. So on LinkedIn, if you just go and type internship, you just type internship and click, and then you first create a LinkedIn account if you don't have. And when you create a LinkedIn account, you link to all the people that you know, the students in your college, the professors, the industry people that you know. If somebody is visiting your college, you can also try and connect with them. So just expand your network on the LinkedIn. On the LinkedIn, you go and just search on this internship. When you search this, you will get this kind of window. Jobs, what kind of jobs you're looking at? Are you looking for a job or internship? That is the question. Then job type, here you can select, internship. And then on-site or remote, you can possibly select remote, because in Himachal if you want to do. Otherwise, if you want to go to a particular location, you can also search that. And then your experience level is anyway, internship. So then you look at all these opportunities and you can directly apply from LinkedIn as well. When you're applying for LinkedIn, or you can follow these, companies which are giving you this opportunity, and then you can directly apply. Very similar to Internshala. After this, you just have to upload your CV and fill up a simple form.
And in that form, you make sure that we will look at that, but you are linking your skills with the kind of skills which is needed there. Similarly, we have Zuno. So on Zuno, if you go, then towards the second half of the page, it will just give you a fresher job or internship. So you select internship, and then it also mentions the area. So you just select the area and then you apply in that area. So any area that you select, for example, technology I'm selecting, it will show me all the opportunities. Now, if I'm looking at virtual only, I can go for virtual. And then I can just apply to all of these jobs. So this is how you can go online and very easily you can apply. One of the things which is important, and let me cover that now. So basically, what are the three most important points when you are applying for your internship? Number one is the right selection. So first of all, when you go there and you do the filtering, that filtering is very important. Just make sure that your filtering is right. For example, if you're looking for jobs in Himachal Pradesh or Chandigarh or Delhi, you just mention that. If you're looking for work from home opportunities, then you mention that. If you're looking for certain categories of job, for example, digital marketing or computer science or machine learning or content writing or education or law, whatever is your area, mention that correctly, then you will get the right selection. Second is your CV. Your CV has to be, modern CV, and the CV has to cover all the significant factors about your life and your experience and your education, which we have already talked about in the last webinar. You do look at that webinar recording if you have not attended that. And also ask for the sample CV. We all have a sample CV. We'll give it to you. You can use that. The third thing which will be very important will be assessment question. For example, this kind of question will be frequently asked to you. Why should we hire you for this role? So when they are asking you, why should we hire you for this role? What you have to do is that in that description of the job, whatever skills that they have given, you have to show an evidence that either you have the knowledge of all of these areas, you have gone through trainings or courses, or you have some practical experience. If you have done some earlier internship, or if you have done some project in the colleges, mention about that. And just mention clearly that I have worked on all of these areas which are required for this particular role. I have experience, I have done my projects. So that is why I consider myself a good fit for this role. So this is the best reply. And based on that matching, they will be selecting you. So this is it for today, from my side. Last point that I wanted to cover is that you can also go to the website of different companies, for example, companies in your area, like IT companies or digital marketing companies, and you go to their, corporate HR emails, and then you can also send them email. You can also connect to them on the LinkedIn and send them an email. So this is a sample email that we have written, which is for internship. I think earlier also I had covered this in the last webinar. But the only thing is that this has to be written professionally in this manner. If you want, we will send you this sample. So it has to be a proper header. Then the letter has to very clearly tell that you are interested in internship and why you are a good fit for internship, what kind of skills that you have, and then show your intent to join them and show your eagerness to join them as an intern. So this kind of emails, a sample email, you can definitely, you'll have to customize for the kind of need that they have. And then you send it to all of them. So these 3-4 things, if you do, Internshala, Zuno, LinkedIn connection, applying for LinkedIn internship, follow all the companies which are showing internship, so that in future also you can, show that it will show it to you on the feed. And then send emails either from the LinkedIn or from directly from the corporate websites. Find out the email and send email to them, right, for the internship opportunity. So with this, you will get a lot of internship opportunity, and you will get paid internship that will also pay you well. So I hope this part is clear. We don't have much time, so I will, try to pass it on to Mahamaya ji, and I request Mahamaya ji to take over legal internship. And we have only 12-13 minutes. If you can quickly cover Mahamaya ji, it will be very helpful. Sure. I have a timer on my
desk, so I'll try and finish it. Okay, so a very warm welcome and good morning to all of you. आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर करेंगे और मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने के लिए ताकि आप सबके लिए आसानी हो। साथ जो टॉपिक्स हम लोग लीगल इंटर्नशिप्स के लिए कवर करेंगे वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस, जैसे कि मेडिकल काउंसिल जैसे डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है। हमारे सारे वकालत की दुनिया में वकीलों के लिए एवं सारे विद्यार्थी जो वकालत पढ़ते हैं उनके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, राइट, जो मैंडेट करते हैं हमारे लिए सारे गाइडलाइंस को। तो उनके गाइडलाइंस फॉलो करना हमारे लिए एकदम कंपलसरी हो जाता है। तो वो उनके बारे में हम समझेंगे कि वो क्या कहते हैं इंटर्नशिप के बारे में। दूसरा, हम लोग कहाँ पे इंटर्न कर सकते हैं, वेयर डू वी इंटर्न, हमारा ये फर्स्ट प्रश्न होता है ना कि मैडम हम इंटर्नशिप तो करना चाहते हैं लेकिन करेंगे कहाँ पे, तो ये हम समझने की प्रयास करेंगे। थर्ड, हम लोग जो करेंगे हमें ये भी समझने के लिए जरूरी होता है कि हम कितना समय तक कर सकते हैं। क्या हम लोग सब पढ़ाई थोड़ा छोड़ के ज्यादा देर तक इंटर्नशिप करें या हम थोड़ा पढ़ाई कम करके करें, क्या हमें अलाउड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, ये भी हम लोग समझने की प्रयास करेंगे। फोर्थ जो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग इंटर्नशिप्स किस प्रकार से कर रहे हैं, हमारा कितना ग्रोथ हो रहा है, क्या हम एक्चुअली अच्छे से कर पा रहे हैं या नहीं, हमें एवेल्युएट करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। तो वो कैसे करें, उसके लिए भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कुछ गाइडलाइंस है, वो भी हम समझने की प्रयास करेंगे। पांचवा जो चीज हम कवर करेंगे कि क्या कपड़े क्या पहने, है ना, हम एक प्रोफेशनल दुनिया में घुस रहे हैं, प्रोफेशनल दुनिया में कुछ चीजें हमें फॉलो करना जरूरी हो जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं और हमारे लिए क्या गाइडलाइंस दिया गया है कि कौन सा कलर का कपड़ा पहने। जैसे कि आपको मालूम है वकालत की दुनिया में ब्लैक एंड व्हाइट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो आप अचानक से जैजी कलर का ब्लू या लाल रंग का रेनबो कलर्स हम लोग नहीं पहन सकते, राइट, हाउएवर मच वी लाइक इट। देन छठवां पॉइंट जो हम लोग कवर करेंगे वो है कि क्या क्या इन जनरल गाइडलाइंस आप सभी को फॉलो करना चाहिए जब आप लोग लीगल इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट कि अगर लीगल इंटर्नशिप्स आपको चाहिए तो किस किस प्रकार से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आशुतोष जी ने बहुत डिटेल्स में बताया है कि ये 3 वेबसाइट है, वो तो एब्सोल्युटली ग्रेट पॉइंट्स, बट फॉर लीगल इंटर्नशिप्स इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट because some of those websites may not always have legal internships in them. तो इसी वजह से आपको कुछ चीजें खुद की तरफ से करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छे से इंटर्नशिप्स मिले। सो वो क्या है, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो बार काउंसिल ऑफ इंडिया गाइडलाइंस क्या क्या है। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एज लॉ स्टूडेंट्स इट इज कंपल्सरी, ये नॉन नेगोशिएबल है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैम मेरा तबीयत खराब हो गया था तो इस साल हमने इंटर्नशिप नहीं किया। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे जिंदगी में कुछ और प्रॉब्लम्स आई थी इस वजह से हमने इंटर्नशिप नहीं किया। इंटर्नशिप इज नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, ये आप नहीं करेंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, राइट, दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारे भारतवर्ष में 2 प्रकार के कोर्सेज होते हैं लॉ स्टूडेंट्स के लिए। एक तो 5 ईयर लॉ कोर्स होता है जो आप ज्यादातर सभी लोग जो भी यहाँ पे मैंने देखे कुछ पार्टिसिपेंट्स है लॉ स्टूडेंट्स, आप लोग ज्यादातर 5 ईयर लॉ कोर्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग 3 ईयर लॉ कोर्स भी करते हैं। वो 3 ईयर क्यों करते हैं, ताकि वो इधर ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में कर लेते हैं, उसके बाद वो वकालत की दुनिया में वो पढ़ाई करते हैं। सो दैट इज 3+3 कोर्स। अगर वो वाला कोर्स आप लोग फॉलो कर रहे हैं, पहले तो मैं 5वां वाला बता दूं बिकॉज दैट इज मोर, आई थिंक 90% ऑफ यू, 95% ऑफ यू विल बी फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। तो 5 ईयर कोर्स वालों के लिए 20 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप इज कंपल्सरी। Now 20 weeks is not 1 year, 20 weeks spread across 5 years. तो क्या होता है, 4 हफ्ता per year. So 4 weeks per year is what you have to do. With 3 year law students जो 3 year के कोर्स कर रहे हैं, यानी कि आप लोग अगर ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोग लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए 12 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप होता है अक्रॉस 5 years. 12 वीक्स यानी कि 4 हफ्ता हर साल. So with 5 year law students, it is 4 weeks per year across 5 years. With 3 year law students, it's 4 weeks of internships per year across 3 years. Next one, आशुतोष। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग कहाँ पे इंटर्नशिप्स करें, ठीक है। लॉ स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर ऑफ इंटर्नशिप्स हमेशा रेकमेंड किया जाता है कि आप लोग किसी एनजीओ में करें।
इसका एक कारण भी है, वो महत्वपूर्ण कारण ये है कि आप लोग इतना लॉ से अभी आप लोगों का जान पहचान नहीं हुआ है, आप लोग अभी करने की प्रयास कर रहे हो। फर्स्ट ईयर में आप छोटे छोटे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, आप टॉर्ट्स पढ़ते हो, आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हो, मोटर व्हीकल्स एक्ट पढ़ते हो, आप लोग अभी फैमिली लॉ पढ़ते हो, ये फर्स्ट ईयर में आप लोग यही पढ़ते हो। तो इसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन किसी भी जगह में थोड़ा सा रिलेटिवली कम होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन अजम्पशन, because when I was a law student, I have worked with lawyers in my first year. Okay, so this is not a mandate, this is something that is recommended. But if you're very passionate about law, you can break any barrier that comes your way. अगर आपको सच में लगता है आप किसी वकील के पास जाके काम करना चाहेंगे या चाहोगे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं बेझिझक से। ऐसा कोई मैंडेटेड रूल नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि यहीं पे करना है, लेकिन आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं ताकि आपको पता चले एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से काम करता है। एक संगठन को समझने के लिए एक एनजीओ में काम करना काफी अच्छी चीज है, लेकिन एनजीओ भी जब आप चुनोगे तो प्लीज देखकर चुनिएगा, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे एनजीओज हैं जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो इंटर्न्स को ढूंढते हैं, फेक एनजीओज होते हैं। हमें उन सब चीजों में नहीं जाना है, हमें अच्छे से रिसर्च करके तभी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है, राइट? दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप ट्रायल एंड अपेलेट एडवोकेट्स के पास काम कर सकते हैं। ट्रायल एडवोकेट्स किसको कहा जाता है? जो लोग क्रिमिनल ट्रायल्स करते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। हमारे भारतवर्ष में 3 प्रकार के जुडिशरी हैं। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है, हाई कोर्ट से हर स्टेट में, हाँ, दैट इज कॉल्ड द हाई कोर्ट, एंड देन उसके ऊपर में है हमारा सुप्रीम कोर्ट, विच इज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। हाई कोर्ट्स में उनको अपेलेट एडवोकेट्स बोला जाता है, और सुप्रीम कोर्ट को भी अपेलेट एडवोकेट्स बोला जाता है। तो इन प्रकार के वकीलों के पास अगर आप काम करना चाहते हैं तो इनके पास भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड, जुडिशरी। आप पूछोगे मैम बट जुडिशरी में तो हम तो जज बने नहीं है, हम क्या काम करेंगे? यू कैन वर्क एज अ लॉ क्लर्क, ठीक है, यू कैन वर्क एज अ लॉ क्लर्क। लॉ क्लर्क क्या करते हैं? जजेस को रिसर्च में असिस्टेंस देते हैं। बहुत बार ऐसे होता है, केसेस चलते हैं, जजेस को जजमेंट्स चाहिए होते हैं, आप वो सॉफ्टवेयर निकाल के, जैसे मनुपात्रा हो गया, एससीसी, सुप्रीम कोर्ट केसेस ऑनलाइन वाला सॉफ्टवेयर होता है, ये सारे पेड सॉफ्टवेयर है वकीलों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। इस पे आप जजमेंट्स ढूंढ सकते हैं और उनको असिस्ट कर सकते हैं। आप नोट्स बना सकते हैं उनके लिए, किसी प्रोपोजिशन ऑफ लॉ, आप लिस्ट ऑफ डेट्स बना सकते हैं। इस एक केस में आपको पता है एटलीस्ट 20 से 25 से 30 डेट्स होना, ये मतलब आई थिंक दिस इज द मोस्ट नॉर्मल दैट वी हैव। सो वो सारे डेट्स का आप नोट बना सकते हैं, 1 पेजर बना सकते हैं। बहुत प्रकार से आप उनको सहयोग दे सकते हैं, राइट? आप उनको सहायता कर सकते हैं, आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू कैटेगोरिकली क्लियर, आप सारे लॉ स्टूडेंट्स को एक चीज मैं हमेशा बोल दूंगी, प्लीज रिमेंबर हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। जब आप आप दिखाते हो किसी भी प्रकार के संगठन में जाके कि आप इंटरेस्टेड हो, nobody can stop you from getting work. The first places of work which I went to, they would refuse to give me work till because they used to think I'm a first year, second year law students. First day I hung around in that place till 8:30 p.m. They didn't give me work. Next day I was there till 9:30 p.m. They didn't give me work. Third day I was there till 10:30 p.m. When I crossed that 11 p.m. mark, they understood this is one heat woman who will not leave. So they started giving me work. And then on my last day, I was told that please don't go. So from the first day when I was told to go back home early, on the last day I was told don't go. And I was given a chauffeur pen with a box of 10,000 rupees cash in those days, and I was sent home. So these small gestures from your end make a greater impact. So the fourth point is you can go to legal regulatory authorities. कौन से regulatory authorities हैं? आप CCI में जा सकते हैं, Competition Commission of India में जा सकते हैं, आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जा सकते हैं, आप यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में। ये सारे छोटे छोटे गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे तो नहीं है, लेकिन हमारे दुनिया में अगर आप सबको कंपार्टमेंटलाइज करेंगे तो वो थोड़ा मिडिल लेवल पे आता है, तो वहां पे आप जाके भी काम कर सकते हैं। लेजिस्लेचर्स एंड पार्लियामेंट, विच इज अ वेरी नाइस प्लेस टू वर्क। पार्लियामेंट के लोकसभा में भी विंग है, राज्यसभा में भी, सेक्रेटेरिएट में भी विंग है, जहाँ पे आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू विल बी टॉट हाउ टू अप्लाई, डू रिसर्च विद एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपके लिए भी ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अदर लीगल फंक्शनरीज, किसी भी और प्रकार के लीगल फंक्शनरीज जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क विद एन एमपी, यू कैन वर्क, यू वांट टू वर्क विद अ मिनिस्टर, यू वांट टू वर्क विद समबडी इन द पंचायत, यू वांट टू वर्क विद एन एमएलए, यू वर्क, है ना?
इस प्रकार के काउंसलर्स के साथ, इस प्रकार के लोगों के साथ भी आप काम कर सकते हैं। आप मार्केट इंस्टीट्यूशंस, लॉ फर्म्स एक बहुत बहुत क्रेज हो गया है इन द लास्ट एटलीस्ट 10 years। बहुत ज्यादा लोग लॉ फर्म्स में जाना चाहते हैं। खैतान एंड कंपनी है, अमर चंद मंगलदास है, इतने सारे लॉ फर्म्स है। क्यों जाना चाहते हैं? बिकॉज लॉ फर्म्स में जब आप अप्लाई करते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, आपको कंपल्सरीली एक स्टाइपेंड मिलता है जो बाकी जगह पे ना भी मिल सके। ये सारे जो बाकी जगह का नाम मैंने बताया है, 90% ऑफ द टाइम्स यू मे नॉट गेट अ स्टाइपेंड। द सेकंड थिंग इज विद लॉ फर्म्स यू हैव अ गारंटी, मोर और लेस आपको पीपीओ मिलने का एक चांस होता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलने का एक चांस होता है। सो लॉ फर्म्स में क्या होता है, जब आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप लॉ फर्म्स में अप्लाई करोगे तो मोर और लेस यू विल गेट अ वेरी वेरी हाई अमाउंट from, even if you start at a mid level, you will get relatively much more higher than you'll be able to feed a family of 15 people. तो आप इस प्रकार से सोचोगे तो लॉ फर्म्स इज क्वाइट अ ल्यूक्रेटिव ऑफर। कंपनीज में भी आप काम कर सकते हो। कैसे कंपनीज है? कोका कोला हो गया, आईटीसी हो गया, पेप्सिको हो गया, किसी भी इस प्रकार की कंपनीज में आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, which is like normal panchayats, MLAs, all of those kind of self government organizations. ऐसे किसी भी प्रकार का बॉडी जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी, जो विद्यालय, विश्वविद्यालय में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रही हैं या कर रहे हैं, वहां पे अगर किसी भी प्रकार का एक सब डिविजन है जहाँ पे आप करना चाहते हैं, आप वहां पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन प्लीज। ये नेक्स्ट पॉइंट इज कितने समय तक हम लोग इंटर्नशिप कर सकते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया है कि कंपलसरी कितना दिन आपको करना है, विच इज 20 weeks अक्रॉस 5 years। लेकिन एक समय पे आप 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं कर सकते। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है। ओके, पहले ये अलाउड था, अभी अलाउड नहीं है, बिकॉज लोग ये इस कानून का, ये रूल का बहुत उल्लंघन कर रहे थे। तो अभी ये रिटन इन प्रिंट हो गया है। पहले लोग 8-8 हफ्ते पढ़ाई नहीं करके ये सब करते थे, थिंकिंग दैट यू नो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट एंड स्टूडेंट्स वुड नॉट अटेंड क्लासेस। बट अकेडमिक्स इज इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप अकेडमिकली वहां पे पढ़ाई नहीं करोगे तो इंटर्नशिप में आप क्या अप्लाई करोगे? You can apply all that what the knowledge that you inculcate and imbibe in your college is what you apply in a setup. So 4 weeks से ज्यादा एक बारी में नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग साल में 2 internships मिनिमम करते थे। So every 6 months we used to do 4 weeks. The next 6 months we used to, after the next 6 months we used to do 4 weeks. So आप इस हिसाब से आपको अपने आप को प्लान कर सकते हैं। The next point is हम लोग किस प्रकार से अपने इंटर्नशिप्स के बारे में ट्रैकिंग कर सकते हैं। ये जो चीज है, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गाइडलाइंस में दिया गया है कि हर स्टूडेंट, हर विद्यार्थी एक इंटर्नशिप डायरी रखेंगे। तो ये इंटर्नशिप डायरी बहुत बार हमारे विश्वविद्यालय से ही मैंडेटेड होते हैं कि ये फॉर्मेट मेंटेन होगा। बट इफ दे डोंट हैव अ फॉर्मेट, इट इज ओके। आप एक डेट लिख लीजिएगा, आप कौन सा दिन में अप्लाई, कहाँ पे आप कर रहे हैं वहां पे लिख लीजिएगा, क्या आपने काम किया है वो आप एकदम एक फॉर्मेट में मेंटेन करिएगा। और जो आपका इंटर्नशिप, जहाँ पे जो दिन के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो इमीडिएट सुपीरियर से आप साइन करवा लीजिएगा हर समय। नाउ प्लीज कीप इन माइंड, ये सारे इंटर्नशिप्स जो इसके बाद आप करोगे, आप कॉलेज में जाके या तो प्रेजेंटेशन दोगे या तो ये सबमिट करोगे या दोनों करोगे। हमारे समय पे दोनों था। सो आपको ये मार्क्स मिलता है, which is basically either you'll be marked on 100 or you'll be marked on 20, and that will be reduced। अगर आपको 100 मार्क्स में 100 में आपको मार्क किया जाता है तो वो 100 को 20 मार्क्स में रिड्यूस किया जाता है। सो बेसिकली अक्रॉस 5 years 20 मार्क्स पर ईयर ऐसे डिवाइड किया जाता है, ताकि ये सारे मार्क्स मिला के 5th ईयर में इसको एक सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, और ये मार्क्स भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम हो जाता है। क्या किस प्रकार के कपड़े हम लोग पहने, ये भी एकदम मैंडेटेड है, बिकॉज ये वकीलों के लिए भी मैंडेटेड है। अगर आप लड़के हैं तो आपको काला पैंट पहनना है, व्हाइट शर्ट पहनना है, टाई इज नॉट कंपल्सरी, आप ब्लैक कोट पहनना इज इम्पोर्टेंट। ब्लैक शू, आप किसी भी प्रकार का ये सब रनिंग शूज ये सब नहीं पहन सकते। ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स, यू कैन वेयर व्हाइट सॉक्स ऑल्सो, बट ब्लैक सॉक्स इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप ये सब प्रकार, आपके पास कोट वोट नहीं है, तो प्लीज at least wear white colored shirt and a black color pant, but your shirt cannot be half sleeved, it has to be a full sleeved shirt. Okay, so please remember, the way you roam around in courts have a deeper impact on the person whom you're working with. Because when I go to courts every day, people ask who are you interning with, जब लोग ऐसे ऐसे अजीब अजीब कलर के कपड़े पहन के आते हैं। ठीक है, तो you don't want to make the person you work under feel embarrassed. With women, you don't have to wear a sari, but you can wear a sari. You can wear a suit, basically you can wear a trouser, you can wear a shirt, and or you can wear also a kurta. So this is something that you have to follow. This does not apply for
corporate firms. Corporate firms, people wear a lot of other flexible clothes. Tips जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो अब अगर आपने कोई किसी भी संगठन में सोचा है कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, so please start applying a little earlier. 3-4 महीने मिनिमम आपको हाथ में रखकर जाना चाहिए. आपको जब आप एप्लीकेशन दे देते हो, प्लीज कॉल द ऑफिस, फिगर आउट कि आपका इंटर्नशिप एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पे लोग 150 लोग अप्लाई करते हैं. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. द इंटर्नशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. They will get a lot of interns, but you may not get all organizations to work under. So the effort has to be from your side. आपको एफर्ट डालना है, पता करना है. एंड जब अगर आप फोन नहीं करते तो एक्चुअली उनको लगता है आप इंटरेस्टेड नहीं है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज आशुतोष जी. ओके, कवर लेटर आशुतोष जी ने अभी एक एग्जांपल दिखाया है जहां पे वहां पे आपने देखा है योर्स लास्ट लाइन में योर्स सिंसियरली वाला लिखा हुआ था. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किस प्रकार से आप अपना कवर लेटर ड्राफ्ट करते हैं ईमेल के समय, आप ये अगर लिख के भेज देंगे, डियर सर प्लीज फाइंड माय इंटर्नशिप अटैच्ड, माय curriculum vitae attached, it is a horrible way to write. Okay, your internship will be thrown in the dustbin. Okay, you can take this in writing from me. ये हमारे ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है. एक प्रॉपर पैराग्राफ में आपके खुद के बारे में, कवर लेटर में क्या क्या इंक्लूडेड होना चाहिए. रेज्यूमे तो आपका अटैचमेंट में होगा, बट आपको बताना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में आप क्यों काम करना चाहते हैं और आपके अंदर क्या क्या है, क्या क्या खूबियां हैं जो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम आ सकता है. एंड व्हाई यू आर सो पैशनेट टू वर्क इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, सम गुड थिंग्स दैट यू हैव डन सो फार. नेक्स्ट वन आशुतोष जी. एंड यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आप देंगे, आप क्यों इस पोजीशन में इतना एंथुसियास्टिक है, आप एक्साइटेड है काम करने के लिए, क्या क्या डिफरेंट स्किल्स आपने, क्या क्या खूबियां हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत पैशनेट है, ये जो फील्ड के बारे में इन्होंने लिखा है इसमें आप बहुत इंटरेस्टेड हैं. एंड जब ये कवर लेटर देख के, आपका रेज्यूमे देख के, इतना एकदम मॉडर्न फॉर्मेट में जब आपका कवर लेटर और रेज्यूमे देख के वो लोग इम्प्रेस्ड होते हैं, उसके बाद वो आपको एक इंटरव्यू के लिए भेजते हैं. या बहुत बार लॉ स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू नहीं होता है, वो स्ट्रेट अवे आपको ईमेल करके ही बोलते प्लीज ज्वाइन. सो दैट इज वेर यू कन्फर्म द इंटर्नशिप. ओके, लास्ट में है कुछ अलग अलग तरीके से जब आपको इंटर्नशिप्स जो मिल सकता है. वन इज प्लेसमेंट सेल. आपके कॉलेज में एक प्लेसमेंट सेल होगा जहाँ पे आप बता सकते हैं कि मुझे इंटर्नशिप चाहिए. बट प्लीज कीप इन माइंड दिस मे नॉट बी ऑलवेज वेरी इफेक्टिव फॉर लॉ स्टूडेंट्स. ओके, स्पेशली इन द न्यूअर लॉ कॉलेजेस. जो नए नए लॉ कॉलेजेस हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स ढूंढना इतना आसान नहीं है. सो यू मे नॉट, दैट प्लेसमेंट सेल मे नॉट बी वेरी रोबस्ट, इतना स्ट्रांग नहीं भी हो सकता है. तो इसलिए आपको साइड बाय साइड खुद के तरफ से आपको एफर्ट डालनी चाहिए. द नेक्स्ट विल बी कॉन्टैक्ट्स. कि अगर आपके जानने पहचानने में आसपास कोई हो, वो आपको कहीं पे बोल सकते हैं, रेकमेंड कर सकते हैं. मूड्स एंड राइटिंग कॉम्पिटिशंस. थर्ड विच इज बेसिकली मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस होता है जहाँ पे आपको एक फिक्टिशियस एक लॉ प्रॉब्लम दिया जाता है, आपको बोलते हैं सॉल्व करिए. सारे लॉ स्टूडेंट्स को ऑल ओवर इंडिया से बुलाकर बोलो कि कंपटीशन खड़ा करते हैं और वो बोलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, और उसके ऊपर एक कंपटीशन होता है. या और भी प्रकार का सेमिनार, वेबिनार, ये सब होते हैं. वहां पे अगर आप वो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन आपको मिलता है, तो आप वहां से भी, जब लोग एक फ्री इंटर्नशिप्स का ऑफर बहुत बार दिया जाता है. बट दिस अगेन इज वेरी वेरी नॉट वेरी फ्लेक्सिबल. ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो द बेस्ट वे टू डू इज टू रिसर्च ऑन योर ओन एंड टू कीप अप्लाई. आई थिंक that's all. Thank you so much. I hand this over to Rajesh ji. Good afternoon, everyone. Supposed to be good morning, but yeah, already past 12. So good afternoon, everyone. I'll just take 3 minutes, given that we've already crossed the time. So this is specifically for people who are into core engineering, and basically आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने internship plan कैसे करना है and how you can make your internship fruitful. So any engineering course that you pick up would have a spread of around 25 to 28 courses over a period of 4 years. And they are spread into or split into 4 different buckets when it comes to specialization. So what you need to understand is eventually which area of specialization I want to pursue my career or higher studies into. And then when you are able to decide that particular bucket, second thing is you need to understand what suits you more, whether you want to do more analytical or R&D type of role, or you want to get into application engineering side of things. Application engineering is more wherein you do hands-on or get into industries which are already established, and you help them maintain their functionality, understand their processes, and develop their products.
So you need to screen out based on your area of interest on where your interest lies. And that will determine what are the keywords you have to search on the platform that Ashutosh has already covered. So your funneling of your interest leads you to the keywords, and those are being used in the platform that we spoke about. And while you're searching for an internship in third or fourth year, you also need to be aware that you can actually build a portfolio of small projects, literature reviews, or any kind of activities that you have done in your while you were part of your curriculum in first, second, or your first 5 semesters. And that you can share with the companies or the hiring team where you want to basically intern, so that that gives a very good impression that you already have some grounding on the topics you're talking about. So if you go to next slide, I just mentioned about planning of the internship. So you need to identify why you are doing the internship. So is it just a stopgap between your BTech and MTech, or you want to fund your higher studies, or you want to learn the skills in the industries hands-on? If that is the case, then you can actually do internships between your semesters as well. So as your maturity grows, you will be you will get opportunities in the industry which suits your age group. So if you're doing it after second year, they may give you work which is more towards using the softwares. If you finish your engineering and do internship, then you get into hardcore developing products or stuff. Once you join as an intern, the expectation from the team lead or the managers is that the whole reason we try to get interns in our company, so we get people who have just passed out of colleges who are very thorough with what has been taught in the curriculum, so that they can apply the first principles. So fundamentally आप पूछोगे कि यार ये चीजें ऐसे ही करनी होती है क्या? Because we in industry are so bogged down by our deliverables and our goals that we sometimes miss out on some important fundamentals that are there. So intern comes in and he gives a fresh perspective कि actually theoretically ये चीजें ऐसे होनी चाहिए. So why don't we try doing things like this? And that trigger helps us to solve more larger problems. Of course, there is the helping hand for daily activities. We have to maintain a lot of data and we have to capture a lot of processes, and these all things happen on MS Office platform. So improving your skills in MS Excel, MS Word and PowerPoint is a helping hand to the team leads and the managers. And as I said, bringing a new perspective, or you learn new softwares. Like, so we've been in industry for last 7-8 years. We've done our studies when even data science had not emerged. But now if I get people who know Python, they can help me in data mining and doing a lot of analytics. That helps me to increase my productivity. So on the next 3 slides, I've basically spoken about the specific buckets that exist in each engineering. I will not take too much of time. So let us talk about mechanical engineers. Eventually, you would move into the design field, into manufacturing, automobiles, or material side of things. So based on that, there are certain key skills that are defined in organizations, and there are key subjects that have been taught in the college. You need to map the skills and the subject, develop your understanding on the softwares associated with that, and apply to the related companies. Same is the case with electrical electronics, which is there in the next slide, and in the computer science. So if I take example of computer science, it could be into proper app development, it could be into data science and analytics, and it could be the physical hardware handling, which is into mainframes and infra, wherein you actually deal with installation of servers and databases, which actually are at the back end of the software we run. So the summary that I would tell you is, see the subjects that interest you, understand the skills that actually come out of those subjects, see what is the industry relevant software that exists, and try to search based on those keywords in the companies that are actually doing those work. Ashiti, we can hand it over to next one. Yeah, Vikramji. नमस्कार. नमस्कार सर. I think मेरे लिए काफी कम टाइम बचा है. 12 बजे तक का टाइम था, and everybody has spoken and said everything, and I am already 12-15 minutes over. तो मैंने अपने नाम के आगे अपने सरनेम की जगह अपना मोबाइल फोन नंबर लिख दिया है. So अगर कोई भी स्टूडेंट मुझसे संपर्क करना चाहे तो इस फोन नंबर पे मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं.
I'm sorry, I'm not very good in Hindi. So I'll do a mix of both. So what I've been asked to cover is what skills are needed to get a good internship in the hospitality sector, and where all students can apply for internship. And if there are any questions anyone has, they can ask me that question on my mobile number. या मुझे आप phone भी कर सकते हैं. I'll be very happy to answer. If time allows me, I'll definitely try to answer. So coming on to the first question, what skills are needed to get into internship of a hospitality sector? एक तरह से देखा जाए तो हमारा hospitality sector जो है is the easiest sector to get in. It doesn't really demand a kind of technical certification or technical education. Hospitality industry में इसकी really में जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि अगर आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज से अगर पास आउट हैं, अगर आपने वहां पे पढ़ाई की हुई है, तो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेट इन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड इट बूस्ट योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द इंडस्ट्री. जैसे कि आशुतोष जी और महामाया जी, वंदना जी ने बताया कि व्हाट ऑल स्किल्स आर नीडेड बेसिकली टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, दैट इज वन. हाउएवर इसके अलावा मैं एक ये चीज कहना चाहूंगा कि आपकी दो बेसिक चीज जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नजर आती है, वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी ग्रूमिंग. ये दो चीजें ऑलरेडी कवर कर दी गई हैं इन द सेशंस बिफोर मी. कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है के लिए इंटरव्यूअर को ये समझने के लिए कि आप कितनी अच्छी तरह से बात को समझ पाएंगे. इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट क्लियरली, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ये बहुत बहुत बेसिक है हर एक इंटरव्यू में, हर एक इंटर्नशिप जिसके लिए आप अप्लाई करें. नाउ इंटरव्यू आपके बेसिकली जहां से जो स्टार्ट होते हैं इज स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर और द एप्लीकेशन दैट यू राइट, जो आशुतोष जी ने बहुत अच्छा एक फॉर्मेट दिखाया. आई होप यू गाइस हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, और इफ नॉट देन यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट. टू get into touch with any of the companies, application is one of the more. Second basic thing which comes across is the interview. Interview जो आपका होगा वो most probably will happen on a video interview, which is like a WhatsApp call video, और या आपका Skype interview होगा. जैसे महामाया जी ने बहुत अच्छा कवर किया उस सेशन में कि आप किस तरह से उसमें ड्रेसअप होते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका हाउ डू यू अपीयर इन एन इंटरव्यू, वो एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है. और दूसरी चीज जो है आपका, वो है आपका कम्युनिकेशन. आपका कम्युनिकेशन, आपका बात करने का तरीका, आपके वर्ड चॉइसेस, ये सब चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं जब आपका इंटरव्यू होता है. और अगेन कम्युनिकेशन को अगर देखा जाए तो बेसिक अगर आप देखें तो हाउ सिंपली यू कैन डिफाइन हाउ योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाएगा सबसे पहले कि आप अपने बारे में बताएं, या आप अपना कोई किस्सा सुनाएं, या you can tell a story about yourself, or they will ask you very basic question as in, for example, when you put across saying I have a very positive attitude, so they will ask you to narrate a story where you have displayed a character of showing a good attitude. तो इस तरह के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके लिए आप बहुत अच्छी तरह से पहले से प्रिपेयर होकर चले. जरूरी नहीं है हिंदी में, जरूरी है कि इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी भाषा में चलेगा, मगर उसके लिए आप कितने अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट. दूसरी बात आती है आपकी फ्लुएंसी. आपकी थॉट प्रोसेस जो है, आप किस फ्लुएंसी से आप अपने विचारों को सामने रख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है. So this is the communication. This is the first thing that we look in a candidate. For example, I interview a lot of candidates in a week, especially for the on-job training programs or for the internship. This is something we are starting again in our hotel, and I interview a lot of people. So I look for these basic things. I look at grooming of those candidates, and I look at the communication. I don't really look at the kind of technicals they might need to have in the hospitality industry. So मैं जानता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, वो एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं इंडस्ट्री में. तो उसके लिए जो बेसिक
बेसिक चीज जो जरूरी हो जाती है इंटरव्यू में फॉर मी टू सेलेक्ट दोस कैंडिडेट आर ओनली दीज टू बेसिक थिंग्स. We look at the grooming and we look at the communication part. Baki rest of the things which are technicals of the industry or technicals of a particular department that you are trying to get into, उसमें उस डिपार्टमेंट की या उस स्किल की, उस कौशल की हम आपको ट्रेनिंग देंगे होटल में, हम आपको इंटर्नशिप करवाएंगे, उसके लिए हमारा सारा प्रोग्राम जो है वो रेडी रहता है. तो बेसिक हमें कैंडिडेट्स में जो इंटरव्यू के लिए आते हैं या इंटर्नशिप के लिए आते हैं, हम सिर्फ ये देखते हैं उसमें कि उनकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, कितनी सरलता से वो बात को समझ सकते हैं और कितनी सरलता से वो बात को समझा सकते हैं. एंड सेकंड पार्ट इज ग्रूमिंग. आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं उस इंटरव्यू में या आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, ये एक बेसिक चीज जरूरी हो जाती है. और ये पॉइंट ऑलरेडी जो है हमारे सेशन में हमने कवर कर लिए हैं. इसके अलावा हाउ टू फाइंड ए इंटर्नशिप, इसके बारे में आशुतोष जी ने आपको बहुत इजीली समझा दिया है. इसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप जिस भी होटल में आप अप्लाई करना चाहें, जिस भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहें, आप देख लें कि कौन से होटल आपके होटल के पास है जहां आप जाकर काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप हिमाचल के आसपास देखना चाहते हैं तो अभी बहुत सारे होटल जो हैं वो हिमाचल में आ रहे हैं या जम्मू में आ रहे हैं, श्रीनगर में आ रहे हैं. अगर आप चंडीगढ़ जा सकें या दिल्ली तक जा सकें, इन सब लोकेशन पे जो है बहुत सारे होटल्स आ रहे हैं. आप वो होटल की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे करियर्स एट जो भी होटल्स है उसका एक ईमेल एड्रेस होता है. वहां पे आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं. जिस तरीके से आशुतोष जी ने बताया उस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन तैयार करें और इस होटल्स में you can send your application to them. And second thing very powerful जो आशुतोष जी ने बताया, जिसको मैं हमेशा रेफर करता हूँ, and we also look for candidates through that website is LinkedIn. LinkedIn में आपका अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो बहुत जरूरी हो जाता है और वहां अपने आप को अच्छी तरह प्रिपेयर करें. And that's how you can apply for these internship in whichever department that you want in these said location, जिस लोकेशन में आप काम करना चाहें, दिल्ली, बॉम्बे और whichever locations. अगर आप पुणे में काम करना चाहें डबल ट्री बाय हिल्टन होटल में, यहाँ पे ऑपरेशंस मैनेजर हूँ, you're most welcome to apply in this hotel. LinkedIn is the website where we are very active at. You can send your applications and we'll be able to help you. इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा. बहुत कुछ बातें जो मैं शायद बोलता वो ऑलरेडी कवर की जा चुकी हैं. आप मेरा नंबर मेरे नाम के सामने जो लिखा हुआ है, यू कैन गेट इन टच विद मी. अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प की जरूरत हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको कोई भी सवाल पूछना हो, टेक्निकल स्किल के अलावा या किसी इंटर्नशिप को और कैसे ढूंढा जाए या किस सेक्टर में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या आप मुझसे कॉल भी कर सकते हैं. This is all I have to say. Thanks a lot, Vikram ji. Really very insightful and practical tips that you have given to our students. And I'm sure today's webinar, with all the speakers giving such an insightful view from their particular industry, will be very helpful to our students. And as a next step, we will also have a core team on internship, which will, connect with the student and help them in getting internship. So definitely internship is very important, just next to the job that you do, because job will only start after you've completed your course. Internship is next to the job, equally important as the academics, but very important for all of us. So I wish you, all the best and have a good day, and then let's keep in touch and, keep connected and work together on this. Thank you. Thank you so much. Thank you.